I hope I am audible to you. 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 Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. I am audible to you. So today we'll discuss the second part. Okay, राहुल दास, गुड इवनिंग. तो लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था माइक्रोबायोलॉजी पार्ट 1 फॉर जीपैट नाइपर. ठीक है, तो अभी पार्ट 2 मतलब उसका ही कंटिन्यूशन देखेंगे. तो विल सी द रिमेनिंग पार्ट. तो व्हाट वी हैव सीन in the previous lecture, I would like to summarize you. So in the previous lecture we have seen some historical points, some discoveries, some causative organisms and their respective disease caused by them. After that we have seen the information about the microscope, then parts of bacteria, bacterial cell, its part, then classification of bacteria based upon the based upon the morphology, based upon the pH requirement, based upon the temperature requirement. After that we have seen the parts of bacterial cell and its function. After that we have seen the growth cycle of bacteria. After that we have seen the staining technique, different staining in short, right? After that we have seen the different examples of bacteria and their their example. So now we'll see the difference between gram positive bacteria and gram negative bacteria. इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. The main difference between gram positive and gram negative bacteria, right? तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में डिफरेंस क्या है कि ऑब्वियसली स्टेनिंग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दे विल गिव यू ग्राम stain positive. Gram staining में gram positive bacteria will give you gram positive test. They will give you positive test. Gram negative test will give negative. They are negative to the gram staining. Gram positive bacteria, they are positive to the gram staining. And main difference is nothing but the difference in the cell wall. Gram positive, gram negative. Gram positive, they will have thick cell wall. उनका cell wall जो होता है वो thick होता है, 20 to 25 nanometer, and in the gram negative they have thin cell wall. So that is because of the peptidoglycan content. So obviously peptidoglycan content of your gram positive is around 50 to 90%. So it is a less in the gram negative bacteria, right? ये कम होता है उसमें. टिकोइक एसिड इज प्रेजेंट इन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और इसके ऊपर 2 बार क्वेश्चन आ चुका है. Teichoic acid is absent in the gram negative bacteria, right? So teichoic acid as well as polysaccharides, they are present in the gram positive bacteria and they are absent in the gram negative bacteria. Lipid content is less in gram positive, it is more in the gram negative. That's why gram negative bacteria is a complex in nature. तो उसका ही नेचर वॉल क्या है, कॉम्प्लेक्स होता है. ग्राम पॉजिटिव का सेल वॉल सिंपल होता है. So that's why your lysozymes and your cells, they can easily destroy the gram positive bacteria. Gram negative bacteria, they are resistant, right? So streptomycin and tetracycline, they can easily they can easily kill the gram negative bacteria, and the gram positive bacteria is less liable. Penicillins and sulfatose, they can easily kill the gram positive bacteria, but they will not easily, or they are less gram negative bacteria are less susceptible for the penicillins and sulfonamides. एग्जाम्पल्स में ऑलरेडी एग्जाम्पल्स के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. तो बैसिलस एंथ्रासिस, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. इसके ऊपर 2 बार क्वेश्चन आ चुका है. एग्जाम्पल्स ऑफ ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव.
ग्राम पॉजिटिव के ऊपर नहीं आया क्वेश्चन, ग्राम नेगेटिव के ऊपर क्वेश्चन आया. रिमेंबर ई कोलाई, साल्मोनेला, विब्रियो कॉलरा इज देन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है. ठीक है, तो एक ही स्लाइड है उसके ऊपर अभी तक 4 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो यू हैव टू रिमेंबर 4 बार क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर, राइट. सो नाउ विल सी द बैक्टीरियल स्पोर्स. बैक्टीरियल स्पोर्स क्या होता है? बैक्टीरियल स्पोर, तो इट इज अ काइंड ऑफ एनवलप, इट इज अ काइंड ऑफ एनवलप और इट इज अ काइंड ऑफ प्रोटेक्शन टू द बैक्टीरिया. So many bacteria they produces the spores, so known as a spore forming bacteria or sporulating bacteria. जो बैक्टीरिया स्पोर बनाते हैं उनको ही अपन क्या बोलते हैं? स्पोरुलेटिंग बैक्टीरिया और स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया. तो आइदर दे विल फॉर्म ए स्पोर इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल. अगर वो स्पोर इनसाइड द सेल है, सेल के अंदर है, तो इसको बोलते हैं अपन एंडोस्पोर. और वही स्पोर सेल के बाहर रहते हैं एक्सोस्पोर, राइट. तो फॉर एग्जांपल बैसिलस एंथ्रासिस, बैसिलस सब्टिलिस, क्लोस्ट्रीडियम टिटानी, ये बैक्टीरिया के नाम है. क्लोस्ट्रीडियम बोटुलियम, कॉक्सिएला बर्नेटी, है ना, थर्मोएक्टिनोमाइसिस एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस. These are the examples of bacteria which will form a spores. So what is a spore? Spore is nothing but the formation of spore is known as a sporulation. The process of formation of spore is known as a sporulation. ये क्या है? It is a method of preservation of bacteria, not a reproduction. So bacteria will preserve himself by using the spores. So sporulation is a method of preservation, not of reproduction. Remember now. जो स्पोर्स होते हैं दे आर द एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट. जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टू द डेसिकेशन, देन स्टेनिंग, देन डिसइंफेक्टिंग केमिकल्स. दे आर रेजिस्टेंट टू द हीट, रेडिएशन, राइट. so that's why these spores helps the bacteria to survive in the extreme condition. जहाँ पे फेवरेबल कंडीशन नहीं है वहाँ पे वो सर्वाइव करने के लिए स्पोर्स बनाते हैं बैक्टीरिया. ठीक है. नाउ स्पोर्स कैन रिमेन वाइबल. ये जो स्पोर्स है, स्पोर्स कैन रिमेन वाइबल फॉर सेंचुरीज. मतलब क्या कि बैक्टीरिया को जैसे ही ऐसा सोच जाता है कि अब एनवायरनमेंट खराब है, अपन मरने वाले, तो वो स्पोर बना लेता है और बैक्टीरिया स्पोर बना के हाइबरनेशन में जाता है और 100 साल तक जिंदा रह सकता है. तो स्पोर्स कैन बी एंड स्पोर्स कैन रिमेन वाइबल फॉर सेंचुरीज and it helps the bacteria to survive in the extreme environmental conditions. So that is the role of spores. Now question आ चुका है. Spores are the most and spores of most of the important medical spores of the most of the medical important bacteria that can be destroyed by moist heat sterilization. Moist sterilization, that is by autoclaving. Autoclaving at a 121 degrees Celsius for 20 minutes. तो आप जो मेडिसिनली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया जो है, मतलब जो इन्फेक्शन करते हैं, दोज बैक्टीरिया हु आर इन्फेक्शियस एंड मोस्ट ऑफ देम आर दोज हु आर स्पोर फॉर्मिंग. तो स्पोर्स ऑफ देम कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय subjecting them autoclaving at a 121 degrees Celsius for 20 minutes or by heating in a oven at a 160 degree for 2 hours. एक तो ऑटोक्लेव में उनको, है ना, यू कैन डू ऑटोक्लेविंग एट 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 मिनट्स और यू कैन सब्जेक्ट देम फॉर ड्राई हीट 160 डिग्री फॉर 2 आवर्स. ड्राई हीट. नाउ all spore and all spore consist of a large amount of dipicolonic acid. Dipicolonic acid. तो स्पोर्स में क्या होता है? डिपिकोलिनिक एसिड होता है और यही केमिकल सबसे हीट रेजिस्टेंट होता है ना. ऑल स्पोर्स कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ डिपिकोलिनिक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ कैल्शियम, है ना, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ डिपिकोलिनिक एसिड नोन एज कैल्शियम डिपिकोलिनिक एसिड कॉम्प्लेक्स and it is having major role in the heat resistance. तो सबसे ज़्यादा हीट रेजिस्टेंस बैक्टीरिया के स्पोर को कौन बनाता है? कैल्शियम डिपिकोलिनेट. तो कैल्शियम डिपिकोलिनेट और कैल्शियम सॉल्ट ऑफ डिपिकोलिनिक एसिड, है ना,
that gives the resistance to the heat, है ना. Calcium dipicolinic acid complex plays an important role in the heat resistance of endospores. और एंडोस्पोर के लिए एक स्टेनिंग टेक्निक होता है, इसके लिए इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. शाफर फल्टान मेथड ऑफ स्टेनिंग. शाफर फल्टान मेथड, दैट इज शाफर फल्टान एंडोस्पोर स्टेनिंग मेथड. ये स्टेनिंग होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है. माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे आर क्लासिफाइड इन अ डिफरेंट वे. जैसे अपने देखा है कि दे आर क्लासिफाइड, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, एक्टोमाइसिस है, फंगा है, रिकेट्सिया है, ठीक है. बाद में बेस्ड अपॉन द टेम्परेचर रिक्वायरमेंट दे आर क्लासिफाइड एज थर्मोपाइल्स, है ना, लाइक दैट. बेस्ड अपॉन द पीएच रिक्वायरमेंट, हमारा एसिडोफिल्स, हमारा न्यूट्रोफिल्स, हमारा बेसोफिल्स. बट बेस्ड अपॉन द यूटिलाइजेशन ऑफ different raw material. So bacteria or microorganisms, they are classified on the basis of various metabolic reaction catalyzed, based upon the various catalyzed metabolic reactions in presence of certain enzymes, है ना. कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं कि उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो, उनको क्लासीफाई कर सकते हो आप. कैसे कि कुछ रॉ मटेरियल को वो कन्वर्ट करेंगे या फिर कुछ रॉ मटेरियल को वो कुछ केमिकल बनाएंगे. So various catalyzed metabolic reactions, they can be divided in presence or absence of certain enzymes or intermediate or metabolites, which will give you information for identification and classifying of microorganisms. मतलब उनका जो मीडियम है, वो जो मीडियम का रॉ मटेरियल है, उसको वो कन्वर्ट करेंगे कुछ केमिकल्स में, उसके बेसिस के ऊपर आप उनको क्लासीफाई कर सकते हो. Microorganisms can be classified based upon the reaction catalyzed presence or absence of certain enzymes, certain metabolic intermediates, and they can be classified likewise this. यहाँ पे देखो spore formation process है यहाँ पे. So that may be either two process, bulging or non-bulging. Spore formation is known as sporulation. Sporulation may be either bulging or non-bulging, right? तो बल्जिंग मतलब ये, बल्जिंग मतलब क्या, एक एंड के ऊपर एक बल्ज जैसा आपको मिलेगा, है ना. तो लाइक वाज दैट ओवल, सब टर्मिनल, ओवल टर्मिनल, स्फेरिकल टर्मिनल, लाइक दिस. एंड नॉन बल्जिंग मीन्स ओवल, सब टर्मिनल, ओवल सेंट्रल, स्फेरिकल सेंट्रल. दीज आर सम अरेंजमेंट्स ऑफ स्पोर्स. स्पोर क्या होता है, अगर आउटसाइड होता है सेल से, तो इफ spore is the outside of cell known as exospore or also known as exosporial. Okay, so before that there is a spore coat, then inner membrane is there, spore core is there. Core मतलब ये bacterial cell होता है, spore core, and then spore cortex, right? So likewise this, there is a spore formation process. So vegetative growth, यहाँ पे pre spore formation, then formation of cortex is there, है ना. बाद में coat, then endospore, and then free spore is released. Now these spores can be survive for centuries, है ना, right. Now identification of microorganism by various biochemical test, है ना. तो पहली टेस्ट है IMVIC, मतलब इंटरनेशनल माइक्रोबायोलॉजी, कुछ उसका लॉन्ग फॉर्म है. तो IMVIC, इसके ऊपर क्वेश्चन भी ऑलरेडी आ चुका है ना. तो देखो IMVIC टेस्ट में पहला है इंडोल प्रोडक्शन. इंडोल प्रोडक्शन मतलब क्या है, सम बैक्टीरिया विल प्रोड्यूस अ इंडोल फ्रॉम द रॉ मटेरियल, फ्रॉम द देयर कल्चर मीडिया. तो एनी बैक्टीरिया यूटिलाइजिंग देयर ओन एंजाइम नोन एज अ ट्रिप्टोफैनेज. Some bacteria will utilize the enzyme known as a tryptophanase. They will utilize this enzyme tryptophanase and degrade the amino acid tryptophan. ये amino acid tryptophanase यूज करके tryptophan को break down करके क्या बनाते हैं, indole pyruvic acid. So some bacteria utilizes the tryptophanase enzyme and degrade amino acid tryptophan into indole pyruvic acid and ammonia. Inoculating such organism in a peptone water and incubate that for 37 degree for 48 to 96 hours. Then
उसके बाद में आपको ऐड करना है 0.5 ml कोवैक reagent mix. You will get a red color. You will get a red color in the alcohol. Red color in the alcohol that indicate the positive test for the production of indole. तो indole production test है ना, ये भी है ना आ चुके हैं. देन मिथाइल रेड टेस्ट और एमआर टेस्ट है ना. मिथाइल रेड टेस्ट और एमआर टेस्ट. मिथाइल रेड क्या है? इट इज इंडिकेटर है ना, बेसिक इंडिकेटर है. अगर बेसिक पीएच होता है तो वो सॉरी एसिडिक इंडिकेटर है, एसिडिक पीएच है तो रेड कलर दिखाता है. ठीक है. एसिड प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन दैट इज डिटेक्टेड यूजिंग दिस टेस्ट. तो कुछ कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं? एसिड प्रोड्यूस करते हैं. एसिड जैसे लैक्टोबैसिलस क्या है? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं. So acid producing bacteria during the fermentation that can be detected by this test. Yeah. Because of the acid produced by microorganisms, the pH of medium will fall, and media used in this case is a glucose 6-phosphate broth. After incubation, the bacteria for 2 to 5 days, तो उसमें क्या है कि कुछ बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करते हैं तो मीडियम का पीएच कम हो जाता है. तो वो बैक्टीरिया जो है वो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट ब्रॉथ के ऊपर ग्रो करने का इंक्यूबेट फॉर 2 to 5 days एंड देन ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ. किसका ड्रॉप ऐड करना है? आपका इंडिकेटर 0.04% ऑफ मिथाइल रेड सोल्यूशन. रेड कलर इंडिकेट द पॉजिटिव टेस्ट व्हाइल येलो कलर इंडिकेट द नेगेटिव टेस्ट. रेड कलर आता है तो पॉजिटिव है, मतलब क्या कि वो एसिड बना रहा है. नेगेटिव आया मतलब वो एसिड नहीं बना रहा है. तो बैक्टीरिया कैन बी कॉल्ड एज एसिड प्रोड्यूसिंग और नॉन एसिड प्रोड्यूसिंग, और बैक्टीरिया कैन बी कॉल्ड एज इंडोल प्रोड्यूसिंग और नॉट इंडोल प्रोड्यूसिंग. नाउ तीसरा है आपका वोग्स प्रॉस्काउर टेस्ट. वोग्स प्रॉस्काउर टेस्ट और वीपी टेस्ट. वोग्स प्रॉस्काउर टेस्ट. तो कन्वर्जन ऑफ, इसमें क्या है? कन्वर्जन ऑफ कार्बिनॉल फ्रॉम पायरुवेट है ना. जो आपका मीडिया है उसका जो कार्बिनॉल है, कन्वर्जन ऑफ कार्बिनॉल टू द एसिटिल मिथाइल कार्बिनॉल known as acetone. Conversion of carbinol to acetone by microorganism during the fermentation in presence of alkali and atmospheric oxygen. तो acetone जो प्रोड्यूस होता है, acetone is oxidized to diacetyl acetone which react with the peptone from the broth to give red color. अगर रेड कलर आता है तो मतलब क्या है कि VP टेस्ट इज अ पॉजिटिव. तो रिमेंबर, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखो नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट. इसके ऊपर जीपैट में क्वेश्चन आ चुका है, नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट. नाउ दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम नाइट्रेट रिडक्टेज. कुछ कुछ बैक्टीरिया क्या है कि नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, व्हिच है ना, दैट एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म रिड्यूसेस द नाइट्रेट टू नाइट्राइट and medium containing potassium nitrate and peptone and distilled water is used. तो ऐसे बैक्टीरिया डिटेक्ट करने के लिए मीडिया कौन सा यूज करना है? मीडिया कंटेनिंग पोटेशियम नाइट्रेट, पेप्टोन एंड डिस्टिल्ड वाटर है ना. आपको इंक्यूबेट करना पड़ेगा बैक्टीरिया. सो आफ्टर इंक्यूबेशन यू हैव टू ऐड रिएजेंट दैट इज 0.1 ml containing अल्फा नैप्थाइल अमाइन एंड सल्फेनिक एसिड 0.5 नॉर्मल एसिटिक एसिड. यू विल गेट अ रेड कलर इंडिकेट द पॉजिटिव टेस्ट. मतलब क्या? अगर रेड कलर आता है तो बैक्टीरिया में क्या है? नाइट्रेट प्रोडक्शन है. नेक्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोडक्शन. तो माइक्रोऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन सल्फाइड फ्रॉम द सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है ना. कौन से होते हैं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड? सिस्टीन होता है, सिस्टाइन होता है, मिथियोनिन होता है. तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड जो है, सम बैक्टीरिया विल प्रोड्यूस अ हाइड्रोजन सल्फाइड. कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम द सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड एंड दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग सस्पेंडेड स्ट्रिप्स ऑफ फिल्टर पेपर इम्प्रिग्नेटेड विद लीड एसिड. मतलब क्या? जो फिल्टर पेपर है लीड एसिड में डुबोने का, तो उसको फिर सस्पेंड करने का है मीडियम बिटवीन कॉटन प्लग एंड ट्यूब. जो आपका टेस्ट ट्यूब में आपने बैक्टीरिया का कल्चर किया है उसमें वो
filter paper soaked in the lead acetate, and that strip you have to place between cotton plug and tube. So use media containing lead acetate or ferric ammonium citrate or ferrous acetate. So color changing from black to brown indicate the positive test. ना मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोडक्शन टेस्ट इज पॉजिटिव. नेक्स्ट होता है यूरियस टेस्ट. यूरियस एक क्या है, एंजाइम है. यूरियस इज द एंजाइम. यूरियस का काम क्या होता है, इट विल ब्रेक डाउन द यूरिया and convert into ammonia. So microorganisms which will produce the urease enzyme, when they are inoculated, when they are grown on a Christian medium containing urea and phenol red as an indicator. So ammonia produced in the reaction will increase the pH of medium. ना तो अमोनिया जो बनता है तो pH बढ़ाएगा मीडियम का. एंड फिनॉल रेड जो है ये क्या इंडिकेटर है, विल चेंज द कलर फ्रॉम पर्पल टू रेड. अगर पर्पल टू रेड कलर होगा मतलब यूरियस टेस्ट पॉजिटिव है ना. बेस्ड अपॉन दैट दे कैन बी क्लासिफाइड है ना. अगेन ये ऑक्सीडेज टेस्ट है. बेस्ड अपॉन द ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड टेट्रा इथाइल पैराफिनाइल इथाइल इथिलीन डायमाइन डाइहाइड्रोक्लोराइड. तो ये एक टेस्ट है आपका ऑक्सीडेज टेस्ट बेस्ड अपॉन द ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड टेट्रामिथाइल पैराफिनाइल इथिलीन डायमाइन डाइहाइड्रोक्लोराइड बाय मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ है ना बाय मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. अगर ऑक्सीडेज एंजाइम है तो ऑक्सीडेज एंजाइम प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया दे कैन कन्वर्ट है ना, दे कैन रिड्यूस द टेट्रामिथाइल पैराफिनाइल इथिलीन डायमाइन dihydrochloride by using oxygen if they are producing the oxidase enzyme. So that's how bacteria can be classified. तो बैक्टीरिया क्लासीफाई करने के लिए ये कुछ टेस्ट है, जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय वेरियस बायोकेमिकल टेस्ट. तो IMVIC टेस्ट, इसका लॉन्ग फॉर्म मुझे भी याद नहीं, कुछ है आप देख लो. तो इंडोर प्रोडक्शन टेस्ट एक है, मिथाइल रेट टेस्ट एक है, एंड वॉगर VP टेस्ट एक है ना, VP टेस्ट. बाद में दूसरा आता है नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट, जिसके ऊपर तो क्वेश्चन भी आ चुका है GPAT में. इंडोर प्रोडक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. नाउ बैक्टीरियाज आर क्लासिफाइड अगेन बेस्ड अपॉन देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट. तो वो कौन से न्यूट्रिशन लेते हैं उसकी बेसिस के ऊपर क्लासेस किया जाता है. तो some are known as the photoautotrophs. Why they are known as the photoautotrophs? Because they takes a light as an energy source and carbon dioxide as a carbon source. So photoautotrophs means they use a light energy and carbon का source क्या है उनका, carbon dioxide. Example of photoautotroph is nothing but the cyanobacteria and some purple and green bacteria. Photoheterotrophs, so again they are using light as energy source and organic compound as a source of carbon, some purple and green bacteria. Chemoautotrophs और lithotrophs, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. Chemoautotrophs और lithotrophs, they uses the inorganic compounds like helium, ammonia, nitrous oxide and hydrogen sulfide for energy production, energy source, and carbon source क्या है, carbon dioxide. Bacteria and many archaea family है ना, they are the chemoautotrophs or lithotrophs. Chemoheterotrophs or heterotrophs indeed. So they are using organic compound as a energy source. Again organic compound as a carbon source. Most of the bacteria belonging to archaea genus. Now how bacteria will transfer a gene, और इसके ऊपर लास्ट 2-3 साल से क्वेश्चन आ रहा है कि the mechanism of gene transfer between the bacteria. Now there are 3 mechanisms. ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ड्रॉ करने का ट्राई करता हूँ.
यहाँ पे एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया है, दूसरा बैक्टीरिया। तो दिस इज अ डेड बैक्टीरिया, दिस इज अ लाइव बैक्टीरिया। So gene from dead bacteria in the solution, they are adsorbed by live bacteria. Gene from dead bacteria that is adsorbed or taken up by the live bacteria, that is known as a transduction. That is known as a transduction. Now another bacteria is there, that is a live bacteria. और एक बैक्टीरिया है आपका लाइव बैक्टीरिया, दूसरा एक बैक्टीरिया है आपका लाइव बैक्टीरिया। जीन फ्रॉम लाइव बैक्टीरिया, when gene from live bacteria is transferred to another live bacteria by using a pilus, 6 pilus, known as a conjugation. Gene from live bacteria to live bacteria is known as a conjugation. And third possibility है आपका, है ना, एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया। हॅलो, हां, नाही मी लेक्चर करतोय ना, काय तुम्ही कोऑर्डिनेट काय झालं, या ना, जायचंच म्हणलं ना तू, मी तो एक 8 वाजेपर्यंत होईल माझं लेक्चर. हो. सो थर्ड इज नथिंग बट द ट्रांसफॉर्मेशन. पहला प्रोसेस क्या है, ट्रांसडक्शन. ट्रांसडक्शन मीन्स ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम डेड बैक्टीरिया टू लाइव बैक्टीरिया. सेकंड प्रोसेस देखा है अपनी कॉन्जुगेशन, ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम लाइव बैक्टीरिया टू लाइव बैक्टीरिया वाया 6 पिलस. एंड थर्ड इज नथिंग बट द ट्रांसफॉर्मेशन. तो यहाँ पे क्या है, तो gene transfer from live bacteria to another live bacteria, which is done by bacteriophage. Bacteriophage क्या होता है, when a virus will attack a bacteria, known as bacteriophage. बैक्टीरिया है यहाँ पे, ये क्या है, बैक्टीरियोफेज. In this bacteriophage, is virus attack the bacteria, known as a phase. When a virus will attack a bacteria, known as a phase. So the gene from this bacteria is taken up by this virus, and then it is transferred to another bacteria. Another bacteria है आपका, so when this phase है ना, so phase mediated gene transfer is known as transformation. और इसके ऊपर 2 बार क्वेश्चन आ चुका है. फेज मेडिएटेड जीन ट्रांसफॉर्मेशन. यहाँ पे कॉन्जुगेशन दिया है. कॉन्जुगेशन मतलब क्या है, ए जीन ट्रांसफर फ्रॉम लाइव बैक्टीरिया टू द अनदर लाइव बैक्टीरिया वाया 6 पिलस. यहाँ पे देखो, तो दिस इज नोन एज ये रेप्लिकेटर, और दिस इज नोन एज 6 पिलस, एंड देयर इज अ डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए. तो फ्रॉम दिस, so है ना,
So likewise this, there is a formation of conjugation tube and through which gene transfer is there. So known as a gene transfer from live bacteria to live bacteria occurs via conjugation. यहाँ पे याद रखना है, live to live occurs via conjugation, dead to live occurs via transformation, and from via bacteriophage known as a transduction. ठीक है, अपने यहाँ पे देखेंगे. तो फर्स्ट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन. So free DNA is transferred from a dead bacteria to the live bacteria, and it is found originally in the pneumococci. सबसे पहले pneumococci में पाया गया था. Small fragment of DNA 10 to 15 genes it is transferred from मतलब dead bacteria to live bacteria. dead bacteria है आपका, लाइव है, ये क्या है, डेड है. So there is a gene or there is a DNA from this bacteria is transferred, है ना, from dead bacteria. DNA diffuses into solution and that is taken up by this live bacteria. Taken up by this live bacteria known as a transformation, dead to live. Mechanism है इसके, in a gram positive pneumococci the DNA fragment is cut 7 to 10 kilobase by enzyme known as endonucleases of the membrane, and only one strand will enter into another cell. तो इसका जो endonucleases है वो DNA को ब्रेक करके 10 to 17 kb का DNA बनाता है, तो वो DNA ट्रांसफर करता है ये बैक्टीरिया में, है ना. दूसरा एक मैकेनिज्म है इन ग्राम नेगेटिव, हाउ देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन. सो हीमोफिलस, है ना, membrane bound and membrane protein, है ना, sequence 10 nucleotide and DNA or double strand DNA inside the cell. मतलब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जैसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, उसमें क्या है, मेम्ब्रेन प्रोटीन, है ना, बाइंड सीक्वेंस ऑफ 10 न्यूक्लियोटाइड एंड देन DNA इन अ डबल स्ट्रैंड इनसाइड द सेल, डबल स्ट्रैंडेड DNA ट्रांसफर करता है. देन थर्ड मैकेनिज्म है इसमें, इन द एंटेरोकोकाई the process takes place by modification of cell envelope by conversion to the spheroplast or modified by surface which permit the taking of double stranded DNA. That is the transformation. In short आपको याद क्या रखना है, transformation is nothing but the method of gene transfer from bacteria to bacteria, from dead bacteria to live bacteria, right? इतना ही. Examples of this type of gene transfer occurs in the pneumococci, hemophilus and नेसेरिया गोनोरिया. ठीक है. नेक्स्ट है आपका ट्रांसडक्शन. ट्रांसडक्शन मतलब क्या, सो इट इज अ जीन ट्रांसफर मीडिएटेड वाया बैक्टीरियोफेज वायरस टू बैक्टीरिया, और इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है. तो ट्रांसफर ऑफ डीएनए, यहाँ पे देखो, ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर वाया बैक्टीरियोफेज. बैक्टीरियोफेज मतलब क्या, व्हेन वायरस अटैक द बैक्टीरिया नोन एज अ बैक्टीरियोफेज, है ना. तो नॉट ओनली क्रोमोसोमल डीएनए बट आल्सो प्लाज्मिड डीएनए. प्लाज्मिड डीएनए क्या होता है, इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया एंड इपिसोम्स आर आल्सो ट्रांसडक्टेड. मतलब क्रोमोसोमल डीएनए तो जाता है, उसके साथ में प्लाज्मिड भी जा सकता है, इपिसोम भी जा सकता है. ठीक है. ट्रांसफर ऑफ एनी सेगमेंट ऑफ डीएनए. हेलो 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 हेलो, हाँ, हेलो हेलो. So transduction means transfer of gene from bacteria to another bacteria via bacteriophage. Remember, along with the chromosomal DNA, plasmid and episomes also can be transformed or transducted. So transduction, याद रखना है इसको, transduction, right? Transfer of any segment of DNA or particular part of DNA to a bacteriophage. Antigenic property or nutrient requirement or drug resistance can occur through this transduction. ठीक है.
रिमेंबर, ट्रांसडक्शन मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया वाया बैक्टीरियोफेज, उसको बोलते हैं अपन ट्रांसडक्शन। इतना ही याद रखना है आपको। देन लाइसोजेनिक कन्वर्जन इज आल्सो पार्ट ऑफ ट्रांसडक्शन, लाइसोजेनिक कन्वर्जन, ठीक है। सम बैक्टीरियल स्ट्रेन गेट्स इन्फेक्टेड विद द टेम्परेट बैक्टीरियोफेज, phase confirms the new properties to the bacterial host cell. Example, non-virulent strains of Corybacterium diphtheria may acquire toxigenicity. हॅलो, हा सचिन बोल ना. तू ताडेला फोन कर ना, मी लेक्चर मध्ये आता ते ताडेला फोन करतो ना, ताडेला नाही जगेला. Right? So some bacterial strain gets infected with the temperate or bacteriophage. Phase confirms the new property to the host cell. Then non-virulent strain of Corynebacterium diphtheria may acquire the toxicity, which is the capacity to produce the endotoxin because of the lyogenization. So it is a type of transduction. Transduction किसमें होता है? So transduction, because of the transduction there is a resistance to the Salmonella, E. coli and S. aureus to the antibiotics. ट्रांसडक्शन मतलब क्या है? जीन ट्रांसफर फ्रॉम बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया वाया फेज और वाया बैक्टीरियोफेज और वाया वायरस, ठीक है। देन थर्ड आता है कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन आई टोल्ड यू, जीन ट्रांसफर फ्रॉम लाइव बैक्टीरिया टू लाइव बैक्टीरिया वाया पिलस और 6 प्लस। सो मेल दैट इज अ डोनर, है ना, डोनर है ना, डीएनए डोनर नोन एज अ मेल and receiver is known as a female bacteria. So male and female bacteria, male means donor bacteria and female means acceptor bacteria. So they come in a contact, you know, they transport the genetic, there is a transfer of genetic material. Capacity to donate or receive gene is determined by sex or fertility factor, sex factor or fertility factor, known as a pilus in the cytoplasm. Here positive known as a male and strain without this factor known as a female. तो बैक्टीरिया में मेल फीमेल बैक्टीरिया कैसे आइडेंटिफाई करना है? उनमें जो पिलस होता है, पिलाय होता है, सेक्स पिलस होता है, उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो मेल बैक्टीरिया है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो फीमेल है, ऐसा कंसिडर किया जाता है। So gene transfer from live bacteria to live bacteria via 6 plus known as a conjugation. Examples of such kind of transfer is known as a example of such kind of transfer occurs in a E. coli, Shigella, Salmonella, Pseudomonas and Vibrio cholera. ये क्या है? उनके एग्जाम्पल्स हैं। These are the different methods of gene transfer. तो फिर से मैं यहाँ पे आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ आपको। मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं आपको। तो ट्रांसफॉर्मेशन और दैट इज अ फ्रॉम डेड बैक्टीरिया टू लाइव बैक्टीरिया। देन एग्जांपल इज अ न्यूमोकोकाई, हीमोफिलस एंड नेसेरिया, नेसेरिया। देन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, न्यूमोकोकाई, दे ट्रांसफर जीन from live to live bacteria, that is known as a transformation. Important है, that is a dead bacteria to live bacteria. So transfer of gene from dead bacteria to live bacteria known as a transformation, है ना। Now transfer of gene from bacteria to another bacteria via virus or via bacteriophage or via simply phase known as a transduction, and transfer of gene from live bacteria to live bacteria via 6 plus, that is known as a conjugation. There are 3 methods for bacterial gene transfer, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, याद करना है आपको, क्लियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज द प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। तो प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? सेल विदाउट सेल वॉल, सेल विदाउट सेल वॉल नोन एज अ प्रोटोप्लास्ट, नोन एज अ प्रोटोप्लास्ट, है ना। बफर्ड एनवायरनमेंट फैसिलिटेट द प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन वाया साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस थ्रू व्हिच जेनेटिक मटेरियल इज एक्सचेंज।
Protoplasmic fusion is also one of the method for gene transfer. Gene transfer by this method is known as genetic transfusion. Genetic transfusion, इसको ही genetic transfusion बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। नाउ इन द बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया होता है आपका, इन द बैक्टीरिया this is known as a chromosomal DNA. This is known as a chromosomal DNA, and there is also one more circular DNA known as a extra chromosomal DNA known as a plasmid. In the prokaryotic cell, जो मेन डीएनए होता है जीन के लिए, जीन कंट्रोल करता है, उसको बोलते हैं क्रोमोसोमल डीएनए. बट इन अ बैक्टीरिया देयर इज सम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए नोन एज अ प्लाज्मिड. सो सर्कुलर प्लाज्मिड क्या होता है, क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. प्लाज्मिड्स आर नथिंग बट द सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन द साइटोप्लाज्म, आइदर इन अ फ्री स्टेट और इन अ रेप्लिकेट, है ना. दे रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, मे बी कॉन्जुगेटिव and are a bacterial plasmid, non-conjugative like a determinant plasmid. तो प्लाज्मिड का फीचर क्या होता है, फर्स्ट दे आर द सेल्फ रेप्लिकेटिंग, क्वेश्चन आ चुका है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, सेल्फ रेप्लिकेटिंग डबल स्टैंडर्ड स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इज नोन एज अ प्लाज्मिड. इट हैज अ सम ओराई सीक्वेंस, मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सीक्वेंस होता है, a gene for self replication. They are lost spontaneously or by curing agents. Some of the plasmids are self transferable. Plasmid can integrate with the host chromosome, known as episome, and they are not essential for survival of cell. Small plasmid are non-conjugative, non-transferable, and they contribute less than 0.5% of total DNA. So 1 to 10 मेगा, है ना, डेल्टॉन उनका मॉलिक्यूलर वेट है स्मॉल प्लाज्मिड का. लार्ज प्लाज्मिड दे आर कॉन्जुगेटिव, सेल्फ ट्रांसफरेबल, एंड 1 to 10% होता है उनका डीएनए होता है अराउंड 20 to 300 मेगा डेल्टॉन. बेसिकली व्हाट डू मीन बाय प्लाज्मिड्स, दे आर द सेल्फ रेप्लिकेटिंग, they are the self-replicating extra chromosomal double stranded DNA which is having origin of replication they are not coding any proteins but they are having different role, right. तो ये होता है extra chromosomal DNA in the bacteria or plasmids. Episomes मतलब क्या, plasmids and episomes they are not plasmids and episomes are not DNA like function, but bacteria they are not a gene like function, they are not DNA like function, but bacteria gets the property of toxigenicity and drug resistance because of the episomes and plasmid. Plasmid episomes क्या होते हैं, they are not required for survival of bacteria because वो DNA का part नहीं है, but because of that bacteria will get a resistance and toxigenicity. Bacteria will get a resistance and toxicity. Properties due to extra chromosomal DNA in the bacteria. बैक्टीरिया में जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है प्लाज्मिड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए और प्लाज्मिड रिलेटेड टू फर्टिलिटी फैक्टर एफ. So that plasmid is responsible for the to synthesize the sex pillars cholinogenic factor. So there is production of cholinogenic factor भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बनाता है. कोलिसिन प्रोडक्शन में इक्वल है. अगेन रेजिस्टेंस ट्रांसफर, तो ड्रग रेजिस्टेंस either by single factor or may carry
gene controlling resistance to the multiple antibiotic, जैसे साल्मोनेला, शिगेला, ई कोलाई, इनको मल्टीपल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है बिकॉज ऑफ दैट प्लाज्मिड. तो प्लाज्मिड रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिनेज एंजाइम इन द केस ऑफ रेस. Virulence of E. coli or diarrhea. Plasmid also coats enzyme for catabolic pathways like nitrogen fixation वगैरह. The main points will take tomorrow. Culture media and remaining point will take tomorrow.